So, we discussed tangent vectors in our last lecture, and we realized tangent vector at a point P of a manifold as maps from the space of C infinity functions on M to R. This is the space of functions which are defined in some neighborhood of a point P in M. So, these some of the things are understood. M denotes an n-dimensional manifold, a smooth manifold, and P always denotes a point in M. And the tangent vector, which is being treated as a map from C infinity P to R, satisfies the two characterizing property. The first one is a linear property given by this, some alpha f plus beta g equal to alpha times xpf plus beta times xpg. Second property is the Leibniz property. It says that when it operates on the product of two real valued function, it gives you xpf into gp plus fp into xpg. Any map on C infinity P satisfying these two properties is called a tangent vector on a manifold. Among the examples, we discuss these two examples. The object del upon del xi we defined. Okay, if xi are the local coordinates around the point P, then del upon del xi at P was defined by this law. It operates on functions and give you del of f composition phi inverse with respect to ui's evaluated at phi p. So, del upon del xi at P is defined in this manner, and this one can check satisfies number 1 and number 2. It is a map on the space of functions and gives you a real number of the right side, and therefore, it is a tangent vector. So, from here we followed that del upon del xi at P for all I lying between 1 and n is a tangent vector at P. This was the first example that we talked about, and the second example was that of a tangent to a curve. So, I define first of all a curve on a manifold, and we say that gamma from an interval I into M is a curve passing through P if gamma of T0, some point from interval I equal to a point P in M, then we say that gamma is a curve passing through P. Usually we consider curves which are smooth. Then we can think of this symbol gamma dash T naught. We define this object as a map on the space of functions defined by d by dt of f composition gamma evaluated at t equal to 0. तो उससे ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट डिफाइन हो जाता है, और इस पर ज़रा गौर करें तो यू विल नोटिस that it satisfies once again property number 1 and 2, and therefore this gamma dash 0 is a tangent vector at P. So, these are the two natural examples of tangent vectors over a manifold. We also realize that if we consider the set of all tangent vector at a point P, it becomes a vector space under pointwise addition and scalar multiplication. So, the notation for the space of all tangent vectors is TPM. So, this is the set of all tangent vector at P. And we realize that it is a linear space over R. So, to every point of a manifold,
you can associate a linear space, and we call it the tangent space. So this space we call as the tangent space. So the tangent space at a point P of a curve is a real line which is tangential to the curve. Similarly, the tangent space at a point P of a surface is a tangent plane. For higher dimensional surfaces, manifolds, the tangent space is an n-dimensional real vector space. Okay, now once you see a vector space, and if it is a finite dimension, you look for its dimension. So now we will find a basis of the tangent space that will tell us the dimension of the tangent space. So my theorem is that the tangent space is a real vector space. The tangent space at each point of a manifold M is a real vector space of dimension n. What is n? N is the dimension of the manifold. It is the dimension of the manifold. So half part of the theorem we have already proved, that the tangent space is a real vector space. This fact we had proven earlier, and now I will find out a basis that will give me the dimension of the manifold. All right. So if P is a point in M, we consider a coordinate neighborhood. So consider a coordinate neighborhood UXI of P, coordinate neighborhood containing P. So P belongs to this coordinate neighborhood. All right. So what I will do, I will look at these vectors. So consider the vectors. Consider a coordinate neighborhood UXI and the tangent vectors del upon del xi at P. We have already realized that these quantities are tangent vectors at P. What I am going to show is that it is a basis. So in order to show that these vectors form a basis of the tangent space, I first need to show that these are linearly independent and they span the tangent space. So first of all, the linear independence of del upon del xi. So what you do in order to show that these vectors are linearly independent, you consider a linear combination of these vectors at a point P. I is running from 1 to n, and suppose this linear combination is 0. ठीक है, हम एक ऐसे linear combination से शुरू करते हैं जो कि 0 हो, और अगर ये वेक्टर इस टाइप के हैं कि सारे स्केलर 0 आ जाएं, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ये तरीका है लीनियर इंडिपेंडेंस शो करने का. तो ठीक है, तो इसको करते ये हैं कि चूँकि ये ऑपरेटर्स हैं, सो लेट मी ऑपरेट देम ऑन कोऑर्डिनेट फंक्शंस. So this I am assuming this sum is 0. So now let me operate these on the coordinate vectors at P on something xj's. Okay, xj's are coordinate functions. So this will also be 0. ठीक है.
ये ऑपरेटर ज़ीरो है, अगर इस इन सम से भी नया ऑपरेटर ही आएगा वो ज़ीरो है तो वो किसी भी चीज़ पे ऑपरेट करके ज़ीरो ही देगा, ठीक है, तो ये ज़ीरो आएगा। अच्छा, डेल अपॉन डेल एक्स आई की डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिए। एट ए पॉइंट P, हाउ डू यू डिफाइन इट? इट ऑपरेट्स ऑन फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? इट्स वैल्यू इज del of f composition phi inverse del ui at phi p. ui's are the natural coordinates in Rn. This is how you define, okay. So उस हिसाब से आप देखें f की जगह अगर xj लिख दें तो क्या हो जाएगा? xj composition phi inverse. So that will become uj. So now you replace f by xj. So this f will be replaced by xj. And do you remember how you defined xj? xj is defined as uj composition phi, and this implies xj composition phi inverse will be simply uj, the jth coordinates of Rn. So this is uj, so you will be getting del uj upon del ui at the point phi p, and the value of this will be Kronecker delta J. So this quantity will be alpha I summation over I, and this will be Kronecker delta J. So when you take the summation you will be getting alpha J. जब सम करेंगे तो सारे क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो होगी एक्सेप्ट द jth वैल्यू, तो ये द अल्फा j इज ज़ीरो, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर ऑल j. मैंने एक्स जे पे ऑपरेट किया था, एक्स के पे करता, किसी भी एक्स पे करता, रिजल्ट यही आता, एंड दिस मीन्स all alphas are 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3, all these scalars alpha are 0. In fact, all of them are equal to 0, they are all equal to 0. And therefore, this linear combination can be 0 only for scalars 0, 0 scalars, okay. So that shows that these vectors are linearly independent. So this proves that del upon del xi at p with I, okay, ऐसे लिख लेते हैं, I lying between 1 and n are linearly independent. ओके, तो एक हिस्सा बेसिस दिखाने का प्रूव हो गया। दूसरी बात जो बेसिस में होती है वो ये होती है कि उसके वेक्टर्स पूरे स्पेस को जनरेट कर देते हैं, स्पैन करते हैं। स्पैन दिखाने के लिए मुझे एक दो चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी। इन फैक्ट व्हेन वी वर लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टेंजेंट वेक्टर, देयर इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए टेंजेंट वेक्टर, a property of a tangent vector. Property of tangent vectors. Since it's a generalization of directional derivative, so we expect that whenever a tangent vector operates on a constant function, it must give me 0. So what I am saying is that xp operating on a constant function is 0, where c is a constant function, where c is a constant function. ठीक है, देखिए होता क्या है कि आप कांस्टेंट फंक्शन के लिए कोई नोटेशन तो होता नहीं है ख़ास, आप सारे फंक्शन को f या g वगैरह से डिनोट करते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी है कि मान ली मेरे पास एक फंक्शन f है किसी भी स्पेस x से r में, और ये ऐसा है कि f of any x give me a constant c.
So what people do, instead of denoting such a function by f, they denote the function itself by c. Okay? So they denote it by c. So c is not a number, in fact it is a function whose value at every point is the number c. ठीक है ना? ये भी एक कन्वेंशन है जो हम लेके चलते हैं। और इसी वजह से अगर मैं 1 कहूँ, if I am talking in terms of functions, so by 1 I mean a map from manifold to R such that 1 operating on any point P gives you 1. So this is also a constant function. We denote it by the symbol 1. So this should be kept in mind. So what I am going to prove is that XPC is 0. So to show that XPC is 0, first I will show that XP1. What is 1? 1 is a constant function on the manifold whose value at every point is 1. So this I can write down XP1 into 1. Okay? And now, being a tangent vector, it will satisfy the Leibniz property. So it will be equal to XP1 into 1 plus 1 into XP1, and this means it is 2 times XP1. So XP1 is same as 2 times XP1. ऐसी कौन सा नंबर है जिसकी वैल्यू अपने से डबल के भी बराबर है? It is none other than 0. So this implies XP1 is 0. Okay, so जब XP1 0 है तो XPC भी 0 होगा, कैसे? So now I can consider XPC. XPC once again you write down as 1 into C. Both of them are constant functions, so I apply the Leibniz property. It will be 1 into XPC plus C into XP1. ठीक है ना? And this can also be written as, I can write down this as XP C into 1, and this can be written as C times XP1. Okay, so what do you notice? These are cancelled out. Right side is XPC plus C times XP1. This is 0. So XPC is C times XP1. XP1 is 0. So you get XPC is 0. XP1 0 हो गया तो उसको आप C times XP1 लिख सकते हो, तो XPC को, and therefore it is also 0. So this property is true कि tangent vector operating on a constant function is 0. So this fact we will be using in proving that del upon del xi span the entire tangent space. So what you do is you have a neighborhood of P inside manifold. There is a point P, and then you have a coordinate neighborhood which you denote by uxi. Now arbitrary point will be someone here, and if you consider a function over here, a phi, it will take it into Rn. So suppose x1p, x2p, xnp, these will be the coordinates of the point P, and you better call them as C1, C2, C3, Cn. Okay. So this is an n tuple of real number, and these are the coordinates of the point P. So if I want to write down, so let f belongs to C infinity P, means it's a differentiable function defined on the neighborhood of P. So I can write down f of x, arbitrary point I am choosing. So it will be by Taylor's formula. So by Taylor's formula,
I can write down f of x equal to f of c plus summation. I will write down the first order partial derivative with the difference. Difference will be xi minus ci. ठीक है ना, आप यहाँ पे लैंड करेंगे तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट x है, ये वेरी कर रहा है, और c जो है मान लीजिए ये पॉइंट c, ठीक है। सो इसके कंपोनेंट्स कुछ होंगे x1 x2 x3 xn, इसके कंपोनेंट c1 c2 c3 cn, ओके। सो xi minus ci, I is running from 1 to n into some function gix. It will be a function of x over here. Plus higher order partial derivatives also will be there, but I am writing this Taylor series up to order 1 only, where gi at the point C will be del f upon del xi at the point P. This is what I mean. So this is partial derivative. So partial derivative as functions लिख रहा हूँ, value नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसकी value at C is precisely partial derivative at the point P. First two terms of Taylor series ये the first two terms. तो आप Taylor series लिख रहे हैं in a neighborhood up to first order term. All right. Now what I will do, I will operate xp on both sides. So operating xp on both sides of the above. जब ब्रैकेट में x लिखा हो तो आप उसको यही समझें कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। ये x सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि f इज़ ए फंक्शन ऑफ द वेरिएबल x. वेरिएबल x इज़ नॉट ए सिंगल वेरिएबल, it is in fact x1 x2 x3 xn. So left hand side is xpf. ये यहाँ पे वैल्यू है, the value of the function at the point C. So xp operating on f, this पे इस पे जब xp ऑपरेट करेगा तो xpc 0 हो जाएगा, so that will be 0. क्योंकि fc is a constant thing, xp operating on this will become 0. Now here you have product of 2 and summation is also there, so plus summation. So xp operating on xi minus of xp operating on this will become 0 into gix. Gix को लिख दूँ del f upon del xi, and this is evaluated at p by Leibniz property. इसका डेरिवेटिव ये at a point p plus xi minus ci at p. बोलिए क्या होगा, या नीचे लिख देता हूँ उसको, प्लस समेशन xi minus ci at p into xp operating on gi, ठीक है ना, समेशन ओवर i. बात समझ रहे हैं? पहले तो आपने xp को xi माइनस ci पे ऑपरेट किया और इसको लिखा gi को एट द पॉइंट p, ठीक है, और प्लस उसके बाद xi माइनस ci को एज इट इज एट ए पॉइंट p इंटू xp ऑपरेटिंग ऑन gi एट द पॉइंट x. ये फंक्शन, अब ये फंक्शन रहेगा, ठीक है, और ये वैल्यू रहेगी. Leibniz property I am using. So I am using Leibniz property over here. So अब देखेंगे ये कि ये टर्म p पे इसकी वैल्यू भी ci's है,
और ये CI तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो CI माइनस CI हो गया. So this term will become 0. Okay, only the first term remains. So what do you get? This gives me XPF equal to summation XPXI into del upon del XI at P operating on F. ऐसे लिख देगा, ठीक है ना. del F अपॉन del XI को मैंने del upon del XI ऑपरेटिंग ऑन F इस तरह से लिखा. अब नाउ F को ब्रैकेट में कर लीजिए चाहे, summation I from 1 to n. So this is true for any F. F was arbitrarily chosen into C infinity P. So this implies that XP is equal to summation over I XP operating on XI into del upon del XI at P. अब इसको ज़रा गौर से देखिए. So you will yes. So you will say that XP is written as a linear combination of del upon del XI at P. We have already shown that these are linearly independent. Moreover, arbitrary tangent vector is written as a linear combination of these del upon del Xi. That proves that del upon del Xi is a basis of the tangent space. And the arbitrary vector of TPM can be written as a linear combination. Yes. This is the definition of tangent. Yes. So this implies that del upon del Xi at P with I is equal to 1 to n forms a basis. So ये XPXI will be constant ना सर? XPXI तो इस अल्फा इस ये कुछ constant होगा? ये रियल नंबर्स हैं. ये numbers आएंगे? हाँ. अल्फा 1 U1 यस यस. क्योंकि जब टेंजेंट वेक्टर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो आपको क्या देता है? रियल नंबर देता है. तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट फंक्शन, तो वो कोई रियल नंबर होंगे. फॉर्म से बेसिस ऑफ TPM, and this basis is known as canonical basis of TPM. A canonical basis known as a canonical basis. This further proves, क्योंकि ये कितने हैं number of linearly independent vectors? They are n because I is running from 1 to n. This further shows that dimension of TPM is equal to dimension of n. And this completes the proof of the theorem. So this is canonical basis is different from standard basis. So like we have स्टैंडर्ड कहें या कैनोनिकल कहें, एक ही बात है. बेसिस कभी यूनिक नहीं होती. There are so many bases, but some of them are important to us, and they emerge as a natural basis. So we call them canonical bases. ठीक है? Okay. एक बात और मैं बताना बीच में भूल गया था कि इफ़ यू हैव अ मैप फ्रॉम वन मैनिफोल्ड टू अनदर मैनिफोल्ड, सपोज सिचुएशन इज दिस दैट यू हैव अ मैप फ्रॉम अ मैनिफोल्ड M to a manifold N, a differentiable map. Manifolds are also differentiable. Now if I pick a function G, which is a real valued function on n,
So corresponding to G, can I find out a real valued function on M also? Through F. With the help of F, can I pull it back onto M? And how it can be done? Let us see. That is easy. I am saying that G is a function, a real valued function on N. So this is G. This is F. Now just to compose the two. So this will give you G composition F. So G composition F is a real valued function of on M. So this implies that G composition F is a real valued function on M. It will also be differentiable because this is differentiable, this is differentiable. So this will also be differentiable. So you get an element in C infinity M. Now this G composition F I will call as F star X, F star G. ऐसे ही लिख लीजिए F star G. और इसको हम ऐसे व्यू करेंगे कि as if there was a function sitting over here and you have pulled it onto M. एक फंक्शन यहाँ बैठा था n के ऊपर, यहाँ कोई फंक्शन था g, आपने इसको पुल बैक किया और एक दूसरा फंक्शन f star g यहाँ के ऊपर ले आए. So this f star can be treated as a map. What f upper star is doing? So this means f upper star is a map from the space of function on N to the space of functions on C infinity N. Okay, and how it is defined? It picks a function g over here and it gives you a function g, f upper star g on M. And this map is called the pullback map. We call f star a pullback map. So for every g in M, we can always find this. Yes, a corresponding function onto M also. तो functions को pull back किया जा सकता है. न सिर्फ functions को बल्कि there are other objects also you can pull back onto the first manifold. So it does not depend on F, whether F is onto or not, so does it matter? No, it doesn't. No, it should be differentiable. It should be a differentiable function. Even if any element in M does not has an image under F, still we can pull back it and we can find some. Yes, on those points it will not be defined. It will not be entire वो point पे नहीं define होगा जहाँ ये define नहीं हो रहा. Because onto नहीं है तो there may be some elements which are. हाँ तो बस ठीक है उतनी डोमेन घट जाएगी. Alright. So this is an important thing. अच्छा अब फिर ख्याल ये आता है कि जैसे हम पुल बैक कर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को, क्या पुश फॉरवर्ड भी किया जा सकता है? ठीक है, तो वो भी आएगा. पहले मुझे ज़रा कुछ और चीज़ें बतानी पड़ेंगी. देयर आर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी पुश फॉरवर्ड ऑल्सो, पुल बैक एंड पुश फॉरवर्ड. Push forward to is already we are taking F from M to N. It doesn't mean we are putting some element M to G. So it is not kind of push forward. नहीं, इसके अंदर कुछ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स भी हैं. पॉइंट कोई पुश फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं. इसके कुछ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट लाइक ए टेंजेंट वेक्टर, लाइक वेक्टर फील्ड्स. तो जो इसके अंदर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं उनको थ्रू एफ आप पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं. कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, ये उस तरह के पॉइंट को पुश फॉरवर्ड नहीं कहा जाता है. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे तो जी को पॉइंट नहीं करेगा. पॉइंट नहीं है, वो जी इटसेल्फ इज ए फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एन. ओके, ऑलराइट. Okay, so this was one thing that you should keep in mind. All right. Now the next thing is the globalization of tangent vector. We call them vector fields. So vector fields. Vector fields on a manifold.
So, as I told you, it is nothing but a globalization of the tangent vector. So, what is happening is that to every point P of a manifold, you are associating a tangent vector xp. ठीक है, और एक टेंजेंट वेक्टर नहीं, बहुत सारे टेंजेंट वेक्टर हैं. देयर आर मेनी टेंजेंट वेक्टर्स. yp is also there, zp is also there. Are so many tangent vectors sitting at the point P. In fact, if you look at the surface, to a point of a surface you can draw a tangent plane. Now every vector in this plane will be a tangent vector to the surface, every vector. Okay. So a vector field is something which to every point associates a tangent vector. So now I am thinking of a map. What it does, it associates to each point P is some tangent vector xp. Okay, there will be another map y which will associate to every point P some other tangent vector yp and so on. So I am thinking of such a map. Look here, आपको मैं बताऊं, आपने इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गौर कीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई, या आप आर एन में अगर गौर करें, फॉरगेट अबाउट द मैनिफोल्ड, जस्ट थिंक ऑफ आर एन. यू आईज आर दी कोऑर्डिनेट्स, नेचुरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एन. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, इसके अंदर दो काम है. एक काम तो इसका ये है कि ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट करके आपको एक फंक्शन दे देता है. दिस इज वंस अगेन ए फंक्शन. एफ इज ए फंक्शन एंड डेल एफ अपॉन डेल यू आई इज ऑल्सो ए फंक्शन. सो डेल अपॉन डेल यू आई व्हाट इट डज, इट पिक्स ए फंक्शन एंड प्रोड्यूसेस अनदर फंक्शन जी. ठीक है, अनदर फंक्शन. जैसे आपने साइन थीटा को उठाया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपको कोसाइन थीटा मिलेगा. तो डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो दैट्स एन ऑपरेटर. ठीक है, तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का ऑपरेटर भी आपको फंक्शन पे ऑपरेट करके फंक्शंस प्रोड्यूस करता है. अच्छा, इसको एक और इसके अंदर बात है कि इफ़ आई कंसिडर डेल अपॉन डेल यू आई एट सर्टेन पॉइंट पी ऑफ आर, सो व्हाट इट विल डू, no, suppose I have del upon del ui, the operator, and what it will do, to every point P it will associate del upon del ui at P. How does this work? It works, it operates on function and produces scalars. अगर किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें और उसको इवेल्युएट करें एट ए पॉइंट P, you will get this scalar. But what is this? This is a tangent vector. This is a tangent vector whose value at f is the real number this. Okay. तो del upon del ui को आप दो तरीके से देख सकते हो. You can see it as if it's an operator on functions which operating on function gives you some other function. At the same time, you can also look at it as if it's a map which to every point P associates the tangent vector del upon del ui. ठीक है ना. ये डेल अपॉन डेल यू आई की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ डेल अपॉन डेल यू आई में नहीं है. इसका मैं अगर एक कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले लूँ उसके अंदर भी यही बात होगी और वो बात यहाँ पे भी होगी. ठीक है ना. तो अब ये ज़्यादा यहाँ पे भी आ जाएगा. ठीक है. सो दैट गिव्स मी द आइडिया ऑफ ए वेक्टर फील्ड. ए वेक्टर फील्ड इज समथिंग विच टू एवरी पॉइंट पी associates a tangent vector. ठीक है. दिस इज हाउ आई विल लुक एट इट. बाद में फिर ये भी देखेंगे कि ये भी इसके अंदर प्रॉपर्टी है. सो लेट मी स्ट्रेट अवे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड. ए वेक्टर फील्ड, a vector field X on a manifold M is a map
that associates to each point P in M a tangent vector xp at P. This is how we realize a vector field. So physically you can see like a point is freely roaming in the space. What? Operated some point P. हाँ, A point it was roaming without any direction. You operated xp, so it gave a direction. वो that is a scalar field. Scalar field. That is a scalar field and it's a vector field. एक तरह से आप सोचिए जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी पॉइंट O के ऊपर कोई मास रखा है, m यूनिट का कोई मास है, और यहाँ पे कई डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे कोई मास है. हर पॉइंट P के ऊपर मान लीजिए कोई पॉइंट P मैंने यहाँ चूज़ किया, वहाँ पे कोई मास है ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड का. तो इन दोनों मासेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स O. इस पे देखें तो इधर को डायरेक्टेड होगा और डिपेंड करेगा इस डिस्टेंस के ऊपर भी. कहीं पे फोर्स कम लगेगा, कहीं पे ज़्यादा लगेगा. एक्चुअली इट इज़ विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स k into m upon r square. This is the gravitational pull. ओके, अब आप देखें हर एक की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सबके अलग अलग होंगे. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर फील्ड. सो ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस. एक मास को मैंने फिक्स कर दिया. अब आप चाहें तो ये इस O को यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बना सकते हैं. You can draw a coordinate frame over here. Now if you are looking at the point P, it will have certain components, say x1, x2, x3. You can determine these components. x1 will be what? x1 will be equal to f cosine theta 1. ये डिपेंड करेगा कि यहाँ से ये अगर कोऑर्डिनेट फ्रेम बना दिया तो ये एंगल मान लीजिए थीटा 1 है, और x2 से इसका एंगल मान लीजिए थीटा 2, किसी और z एक्सिस से थीटा 3 है. तो cos थीटा 1 कितना होगा? मान लीजिए ये डिस्टेंस r था, तो x ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? x अपॉन r. ठीक है ना. तो cos थीटा 1 विल बी x अपॉन r. f कितना हो गया? x1 कहिए इसको. तो ये हो गया f कितना है? km. तो ये फर्स्ट कंपोनेंट जो आया वो आया km अपॉन r क्यूब. सेकेंड कंपोनेंट क्या आएगा? सेकेंड कंपोनेंट विल बी इक्वल टू km इंटू x1 भी है, सॉरी x नहीं नहीं ये f इसको x1 नहीं, ये fx1 है. ठीक है. तो ये मैं गलत लिख गया, ये fx1 है, यानी f का x1 कंपोनेंट और f का x2 कंपोनेंट और x का x3 कंपोनेंट, तो वो होंगे ये x1, यहाँ x2 आ जाएगा अपॉन r क्यूब, और fx3 जो है that will be km x3 upon r cube. So the vector field, overall vector field will be written like this. Overall vector field will be fx1, fx2, fx3. So first component, तो km upon r3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, r क्यूब को बाहर लिख लिया, तो हो जाएगा x1, x2, दिस विल बी द वेक्टर फील्ड. तो आपने देखा कि वेक्टर फील्ड ग्रेविटेशनल पुल इज ऑल्सो अ वेक्टर फील्ड इन R3.
हर पॉइंट पे ख़ास मैग्नीट्यूड की का वेक्टर बन रहा है और उसकी कोई अलग ही डायरेक्शन है, वो डिपेंड कर रही सारी चीज़ें उसके डिस्टेंस पे. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए वेक्टर फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यस, तो वो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं वो एरो के निशान से, वो सब वो दे आर ऑल वेक्टर फील्ड्स. इज इट राइट? ऑलराइट. ओके. हाँ जी जी जी. तो वो आपको अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर मिल जाते हैं. तो वो जो मैप है जो ये आपको डिफरेंट डायरेक्शन में वेक्टर दे रहा है अलग अलग पॉइंट पे, ये मैप जो है ये वेक्टर फील्ड है. मैथमेटिशियन डील विद द मैप. ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ दिस इज वन डेफिनेशन. अब आप देखें कि डेल अपॉन डेल एक्स आई, सो सपोज डेल अपॉन, लुक एट डेल अपॉन डेल एक्स आई, ith कोऑर्डिनेट लिया. ओके, सो व्हाट इट डज to every point P it associates del upon del xi at P. This becomes a tangent vector and therefore this object without a point P is the vector field. ठीक है? So this is a vector field which is working only on a coordinate neighborhood. So this implies del upon del xi for each I I lying between 1 and n is a vector field on the coordinate neighborhood uxi. Not only this, I will not stop here. I will consider some functions xi i's into del upon del xi. If you multiply these operator by function, it will remain an operator. At a point P, if you consider this whole thing at a point P, what it will be? It will be some xi I at P into del upon del xi at P. Am I right? This is the value of xi I del upon del xi at P. What is this? It's a tangent vector. Summation is understood. This is our convention whenever I is a dummy index, because I indices are same, then means summation is understood. So summation हम लगाते नहीं हैं, but that is always there. So this quantity in the bracket is a vector field. So not only del upon del xi is a vector field, their linear combination is also a vector field. So in fact, you can write down a local expression of a vector field. Hence the local expression. So what you notice from the above discussion is that the local expression, this implies the local expression of a vector field x is, when I say local expression, I mean the expression which is valid only on a coordinate neighborhood uxi. So that will be some summation लगाने की ज़रूरत नहीं है, xi I into del upon del x, where xi i's are functions where, and this is valid on the coordinate neighborhood uxi. क्योंकि एक्सप्रेशन में xi आ रहा है तो ये वहीं तक वैलिड है. अगर आप कहना चाहते हैं कि दिस इज वेक्टर फील्ड ऑन M, so consider its value outside the coordinate neighborhood as 0. Okay, so where xi i's at the point P are those scalars. अभी थोड़ी देर पहले xi i's at P are what? It is xp operating on xi. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था उसको मैं खाली xi I से डिनोट कर दूँ. ठीक है, सो दिस इज द लोकल एक्सप्रेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड. नाउ
one more thing you can notice from this local expression of a vector field is the following. कि अगर इसको मैं गौर से देखूं इस एक्सप्रेशन को, then you will see that I can operate a vector field on functions also. अगर सिर्फ xi इंटू डेल अपॉन डेल एक्स आई को आप देखें तो xi के साथ डेल अपॉन डेल एक्स आई लगा हुआ है, और दिस वर्क्स एज ए ऑपरेटर ऑन फंक्शंस. सो व्हाट इट विल डू, इट विल ऑपरेट ऑन फंक्शंस ऑल्सो, and this quantity will become what? It will be a function. Is it right? So xi is already a function, because these are functions which operating on p gives you this real number. So xi is a real valued function, and this is also a real valued function. So it becomes a real valued function. So what I will say that x can be considered as a map from C infinity m to C infinity m. It will operate on f and it will give you xf, which is once again a function. Is it right? So once it's a function, and moreover it will have certain properties. This function will not be arbitrary, it will having certain properties. क्या properties होंगी? जो डेल अपॉन डेल एक्स आई में होती हैं, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स आईज. डेल अपॉन डेल एक्स आई को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स आई जो मैनीफोल्ड का है वो डिफाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेल अपॉन डेल यू आई, और डेल अपॉन डेल यू आई के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं करेक्टराइजिंग, एक तो लाइब्निज प्रॉपर्टी और दूसरी लीनियर प्रॉपर्टी. सो एक्स कैन ऑल्सो बी रिगार्डेड एज ए मैप. सो ए वेक्टर फील्ड can also be regarded as a map like this. And ये बात कहाँ से हमारे दिमाग में आई? By looking at this expression. So, and satisfying the following property. Number one, x of f plus g will be equal to xf plus xg. Number two, and यहीं पे लिख लीजिए x of alpha f equal to alpha times xf. And number two, ये दोनों एक ही हैं. लीनियर प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, तो मैंने दोनों अलग अलग लिख दिए. ठीक है. एंड सेकेंडली एक्स ऑफ एफ इंटू जी, चूँकि सब एफ जी सब रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स एफ इंटू जी प्लस एफ टाइम्स एक्स जी. ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं उसी तरह की जो टेंजेंट वेक्टर में थी, बस ये ग्लोबली ऑपरेट हो रही हैं. एक्स जो है ग्लोबली ऑपरेट हो रहा है, वहाँ पे लोकल था, एट ए पॉइंट था. सो दीज आर दिस इज कैन बी रिगार्डेड एज another definition of vector field. Okay, I will talk more about vector field in my next lecture. Stop.